Now, students, in this lecture, we will discuss the part second, that is solution of linear equations. So, how many solutions does a linear equation have? So, we know that the graphical representation of a linear equation is a straight line, and straight line is made up of infinite points. Straight line किससे बनी होती है? The joining of infinite points. So, first of all, first point is a linear equation have infinite many solutions. So why the question is that why a linear equation have infinite many solutions? Because linear equation, the graphical representation of linear equation is a straight line, and straight line is made up of infinite points. That's why linear equation have infinite points. Now question is that suppose 2x plus 3y equals to 12. Find three different solutions of linear equation. Given linear equations के क्या find out करने हैं आपको? Three different solutions find out करने हैं. So how we will finding out the three different solutions? So we will put here the different value of x, then we will obtain the different value of y. So we will start from x is equals to 0 put करो, 2 multiply 0 plus 3y equals to 12. 2 multiply 0, 0 plus 3y 12. 0 plus 3y equals to 12. So what is the value of y? 12 upon 3, 4. So its first solution is 0, 4. X value 0 and y value will come 4. Now second, x is equals to 1 put करो, 2 multiply 1 plus 3y is equals to 12. Then 2 plus 3y equals to 12. 3y is equals to 12 minus 2. Y is equals to 10 upon 3. So second solution is 1, 10 upon 3. How next third solution? Third solution we will put x is equals to 2. Substitute x equals to 2. 2 multiply 2 plus 3y 12. 4 plus 3y equals to 12. 3y equal 12 minus 4. Y equal 12 minus 4. 8 upon 3. So third solution 2, 8 upon 3. So understand students how we will finding out a different solution if a linear equation is given. We will substitute the x value different, then we will obtain the y value also a different. Next type क्वेश्चन देखो इसी पे, सेकंड टाइप क्वेश्चंस क्या फॉर्म हो सकता है? What is meaning of unique solution? That is one solution. आपके बुक में गिवन होगा यूनिक सॉल्यूशन वर्ड. यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? वन सॉल्यूशन. एग्जैक्टली. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इफ 3, 5 is a solution of given linear equation 3x plus 4y is equals to k, then find k value. Already given to you that 3, 5 is a solution. 3, 5 given linear equation का solution है. Meaning is that it satisfy द गिवन लीनियर इक्वेशन और नॉट. सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है? इसमें जो x और y की वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको गिवन इक्वेशन में क्या करनी है स्टूडेंट्स? पुट करनी है. सो हियर x is equals to 3 and y is equals to 5. Substitute in given equation. 3 multiply 3 plus 4 multiply 5 equals to k.
339 4 5 20 is equals to k. So what is the value of k? Like factor जैसा ही क्वेश्चन है. If x minus 3 is a factor of that given polynomial, then find the value. Same condition is here in equation. So here 3,5 is the solution of the given linear equation. So how we will find out the value of unknown? Same by putting. देखो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है. If 3,5 and 2,7 are the a solution of given equation ax plus by is equals to 12, then find a comma b. So here we form two equation. ये same question polynomials में भी करवाया था मैंने आपको. So how we will find out? First of all, 3,5 is a solution. So x value 3, y value 5. Substitute here. 3x plus 5y is equals to 12 equation first. Second क्या बनेगा? 2,7. 2,7 is a solution. So what is the value of x? 2. What is the value of y? 7. पुट करो. क्या बनेगा ये? ax है तो क्या बनेगा? 2x plus 7y is equals to 12. Now here two equation. सॉरी रॉन्ग हो गया ना, x की जगह पुट करना है. तो ये क्या बनेगा? 3a 5b 2a 7b. So here two equation. ये फर्स्ट इक्वेशन क्या, इसको रीराइट कर लेते हैं. 3a plus 5b is equals to 12 फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन 2a plus 7b is equals to 12. So here two equation in the form of a and b, then we can easily find out the value of a and b by substitution method or the elimination method that I already told to you in previous lecture of chapter 2 polynomials. Polynomials में इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था और ऑलरेडी मैंने बता दिया था. Okay. Now next is how we will draw the graph of a linear equation in two variable. If linear equation is given to you, then how we will draw the graph. इसका ग्राफ कैसे फॉर्म करना है? Next is graphically a representation of linear equation. How we will represent the graphical form of linear equation in two variable. Example is draw the graph of 2x plus 3y is equals to 12. So how we will draw the graph of the given linear equation in two variable? For that, first of all, we will find out the exactly intersection point on x-axis and exactly intersection point on y-axis. So how we will find out the student exact intersection point on x-axis and exact intersection point on y-axis. So x-axis पे intersection point कैलकुलेट करने के लिए क्या पुट करोगे? y equals 0. और y-axis पे intersection point कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट? x equals to 0. So first we will put x equals to 0 for intersection point on y-axis. So substitute 2 multiply 0 plus 3y equals to 12. 0 plus 12. So from here 3y equals to 12. Y equal 12 upon 3 4. And we will make here table also.
x y. We put x value 0, then we obtain the y value is 4. Second, we put here y value 0. Y equals to 0, meaning is that for intersection point on x axis. So how we will finding out the intersection point on x axis? We will put y equals to 0. Y equals to 0 put करोगे 2x plus 3 multiply 0 is equals to 12 है. 2x plus 0 12 है. 2x is equals to 12 है. So what is the value of x? 12 upon 2 is 6. So 0 6. Now we obtain the intersection point, exact intersection point on x-axis and the y-axis. Now these point we will locate on graph. अब क्या करना है, इनको ग्राफ पे लोकेट करना है. Yes. Now we will represent this point on the graph. Origin, the point at which both axes are intersecting to each other, that point is known as the origin. X-axis and that point is a y-axis. Now we will write down the values 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and minus 6. Minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. First point x 0, y 4. So where we will move x 0, x equals to 0, then we will move on y axis. Y axis पे चलो. Where is y is equals to 4? At that point. So point यहाँ पे है. So point A coordinate is 0, 4. Second, y is equals to 0 and x value 6. So we will move on x axis. Y 0 है तो किस axis पे move करोगे? X axis पे भी है. At that point, point B 6, 0. Now we will join. अब क्या करवाना है? इनको join करवाना है. First point आपका एक point ये रहा and one point is here. Now we will join. And we will extend. Then we required the graph 2x plus 3y is equals to 12. Intersection point calculate कर लिया आपने. Now we will write down here scale also. So on that corner you will mention the scale on x-axis. One big block is equals to 1 unit, and on y-axis also, y-axis पे भी क्या बनेगा स्टूडेंट? 1 big block is equals to 1. Now the different question is there. इसी में और क्वेश्चन क्या हो सकता है? Find the area of the triangle which is formed by the line and two axes. आपको area of triangle कैलकुलेट करना है which is forming by the line and two axes. So which area or which triangle is forming here student? यहाँ पे कौन सा triangle form हो रहा है? That triangle is forming or not between line and that. So how we will finding out the area of triangle AOB? So what is the area of triangle AOB? 1 upon 2. What is the base? OB. And height is OA. 1 upon 2. What is the value of OB? OB value क्या है? 6 multiply OA value for 3 for 12 square unit. So area of that triangle will come 12 square. Understand students? Any problem? और देखो इसी क्वेश्चन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं? If given to you here one more equation 3x plus 4y is equals to 24. आपको क्या करना है? इसका ग्राफ भी बनाना है.
सेम में. सो हाउ वी विल मेक, फॉर दैट वी विल मेक टेबल. इसके लिए टेबल बनाओगे आप. x y, when we will put x 0 then y is 6, when we will put y 0 then x is 8, x 6 8. So when x is equals to 0, y value 6 and then 6 upward, extend करो इसको, ये 5 और ये 6 and here 7 and 8. First point is here, second point is here, then join both of them. Okay, so these are the line intersecting होगी या फिर ये क्या होगी, पैरेलल होगी. 0, 6, 8, 9. So lines are parallel or either the intersect. So if two equations are given to you, then easily you can draw the graph in the same graph. और देखो इसी इक्वेशन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं. सपोज वन मोर इक्वेशन दैट इज पासेस फ्रॉम दैट टाइप. आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया और ये इस टाइप से पास हो रही है. नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज एनक्लोज बाय द टू लाइंस एंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. So two lines and with respect to x axis which triangle, that triangle is not x axis के respect में यही है. So coordinate क्या है इसके, -2, 0, इसके 6, 0 and what is exact, suppose 3.1, 0. So what is the base, इस triangle के लिए base क्या बनेगा, यहाँ पे कितने ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है, here 2 ब्लॉक, then base is 8 and what is the height is 3.1. Understand? Or equation, find the area of triangle which is forming by the two lines and with respect to y axis. So y axis के respect में कौन सा triangle form हो रहा है स्टूडेंट्स, with respect to y axis that triangle is here. यहाँ पे ये triangle form हो रहा है नहीं हो रहा. अब इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना. Understand? Next is that in your book one question is given to you, the temperature conversion. How we will convert the degree Celsius into the Fahrenheit and how we will convert Fahrenheit into the degree Celsius. देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. Question is F is equals to 9/5c plus 32. आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. So F और C में कंफ्यूजन नहीं होना. You will consider x y. You will take degree Celsius on x axis and Fahrenheit at y axis. So meaning is that F को y write कर सकते हो 9/5x plus 32. Now you can easily do. We will put x value 0, then we will get y value 0, then we will get the x value. After that we will locate on graph. Second question क्या है, इसी में सपोज करो if C is equals to 30 degree, then find out F. अब C की वैल्यू 30 है, F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. सो कैलकुलेट करो. F इक्वल्स टू 9/5 into 30 plus 32, 6, 9, 6, 54 plus 32, that will come 50, 80, 86 degree Fahrenheit. और क्या है इसमें, if C is 0 then what is F, if F is 0 then what is the C. And last question क्या है इसमें, is there any temperature in which at which the degree Celsius is equals to Fahrenheit. क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पे F is equals to C है, उसको क्या ले लो, K कंसिडर कर लो. तो क्या बनेगा, K इक्वल 9/5 की प्लस 32, K वैल्यू कैलकुलेट करो. K माइनस 9/5 K is equals to 32, 1 K, 5K minus 9K is equals to 32, minus 4K equal 32 multiply 5. So K equal minus 32 into 5.4 minus 8. So K value will come minus 40. So F is equals to C is equals to किस पे होगा, minus 40 degree Celsius and minus 40 degree Fahrenheit value will come equal. यही है आपका. एंड लास्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, हाउ वी विल राइट डाउन द इक्वेशन
parallel to x axis and equation parallel to y axis. So equation फर्स्ट आता आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल देखो कौन सी लाइन होगी आपकी, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस के पैरेलल आइदर दैट लाइन और दैट लाइन. अब ये क्या बनेगी पॉजिटिव, y इज इक्वल टू क्या होगा, या तो प्लस ए होगा और ये y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए. सो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए. एंड व्हाट इज a? a इज कांस्टेंट. मीनिंग इज दैट इफ a y वैल्यू विल कम, अगर आपके पास ये आ रहा है 2y प्लस 5 0, so 2y is equals to minus 5. y वैल्यू क्या बनेगी minus 5 upon 2 minus 2 upon 5. So if we obtained y value, then the equation or the line is parallel to y x axis. So line is parallel to x axis. Its converse. How we will write down the equation of line which is parallel to y axis? अब देखो y axis के पैरेलल लाइन क्या होगी, either that one or that one. तो ये क्या बनेगा आपका, या तो x is equals to प्लस a बनेगा और ये या फिर क्या बनेगा x is equals to माइनस a. So that form x equals to plus minus a. That is equation of line which is parallel to y axis. For example 2x plus 5 0, so x वैल्यू क्या बनेगी माइनस 2.5. सो अगर x की वैल्यू आ रही है आपके पास, सो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा. और इफ वी ऑब्टेन y वैल्यू देन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. नाउ हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन वन वेरिएबल फॉर्म एंड टू वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स देखो, वन वेरिएबल एंड सेकेंड इज टू वेरिएबल. सो वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है, नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. हाउ वी विल रिप्रेजेंट माइनस 2.5 ऑन नंबर लाइन, दैट यू विल कंसिडर y एक्सिस मिडिल 0 -1 -2 -3 1 2 3 -2.5 between them. So you will draw dotted line and that is y equals to -2.5. टू वेरिएबल मीनिंग कार्टेशियन प्लेन. so ये किसकी फॉर्म आपकी, टू वेरिएबल्स की फॉर्म. so that is your all about the chapter. okay students, understand? okay, thank you all students.